So the plan, the way I want to structure today's presentation, that we'll have, just to give a quick background, because background क्या था अपना, technical loss and commercial loss. So we'll just try to wrap up in 2 slides क्या करना चाहिए. Then this loss reduction target, जो आप data analytics का बात कर रहे हो ना, how do we target? Data analytics will be one of the tool, but we need to understand क्या करना चाहिए हम लोग को. So and this is one of the very important point which I believe for any loss reduction, without energy audit, energy accounting, unless you identify the loss, अगर लॉस आपको कितना हो रहा है लॉस वो पता नहीं चलेगा कि कितना क्या रिड्यूस करोगे. सो यू नीड टू नो बाय ऑडिटिंग और अकाउंटिंग एग्जैक्टली कितना लॉस कहाँ हो रहा है. ऑडिट इसलिए करना चाहिए कहाँ हो रहा है. टोटल डिस्कॉम में टोटल इंडिया का लॉस की तो हम बात नहीं करेंगे. वी नीड टू गेट इनटू पिन पॉइंट इनटू अ फीडर अल्टीमेटली. उसके पहले सर्कल लेवल जाएंगे, डिवीजन लेवल जाएंगे, फिर सब डिवीजन, फिर सेक्शन, कोई को 6 सेक्शन को और कुछ बोलते हैं. तो देन इंटरवेंशन प्लान, हाउ डू वी इंटरवीन दैट, दैट इज वेयर द डेटा एनालिटिक्स का चीज आएगा उसमें, दैट हाउ वी कैन डू द डेटा एनालिटिक्स पार्ट. एंड देन हाउ टू मॉनिटर, अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू द फील्ड, तो मॉनिटर एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे करोगे. तो बैकग्राउंड में we had this. So I just want to go back to the earlier presentation. आपको अगर थोड़ी 10 seconds लेके आप कोई बोलिए that how much, what are the technical losses, if you remember something we had, technical losses क्या था, commercial losses क्या था. Anyone from the online team, can you tell us? You can do cheating because you have the presentation with you. Sir, total loss, technical loss, that is the DTR and conductors. DTR matlab number of DTR outages, availability of maintenance material and number of consumer per lineman. And conductors का जो था, specification of conductor use, HT by LT line ratio and line unbalancing. ये हुआ technical loss. और commercial loss जो था, commercial loss और कोई बताए? Someone else should say commercial loss. How many of them are there online right now? 4 or 5. 4 or 5. अपना 4 ही है. Yeah, we can't see both the screen. ये problem है Teams में. ठीक है ना? This is just to give you background. So probably I didn't get introduced. What's your name? My name is Pratyay. My name is Pratyay Majumdar. Pratyay Majumdar. So Pratyay, so this is what we discussed in the earlier session, that what are the technical and commercial loss. Any questions you have on the, I mean, from last time we didn't had enough clarification time. अगर आपको कुछ questions है technical commercial loss के बारे में, we can discuss here. So Pratyay, you can. Actually, we are calculating the feeder-wise losses. The thing is, where it is actually ground पे, वो pinpointedly हम कहाँ पे हो रहा है, we are not unable to know. अच्छा. Field level पे, वो एक main problem हो रहा है हम लोग को. और एक क्या है, एक robust methodology रहा तो ट्रांसफार्मर के पास मेकिंग भी रखा है, मॉडल भी है, बट वो टेक्नोलॉजी को हम अडेप्ट नहीं किए और एक कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया, उससे वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है. अच्छा, वो तो टेक्निकल टेक्नोलॉजी इशू हो गया. टेक्नोलॉजी इशू का उसमें थोड़ा रोबस्ट, मतलब कि कहीं किसी कंडीशन में भी अच्छा हो, उस टाइप का फैसिलिटी वो कहाँ मिलेगा आप बताएंगे तो थोड़ा हम उस टाइप का हम नहीं, वो तो आजकल का ऑलरेडी वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल. तो पहले जो किया था वो सारे जीपीआरएस सिम कार्ड बेस्ड इसमें किया था. नाउ व्हाट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आ रहा है, लोरा बोल के टेक्नोलॉजी है, देन
NB-IoT, that narrow band IoT डिवाइस, ये वाला चीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज में क्या होता है, डेटा का एंड लो कॉस्ट में, क्योंकि अभी जो सिम कार्ड जो है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। आई मीन टू डेटा, हम लोग को लगता है ठीक है हम लोग के पास सब कितना, वी पे क्वाइट ए बिग अमाउंट इन फॉर आवर डेटा कनेक्शन, बट व्हेन यू आर एज ए यूटिलिटी स्केल जाओगे, इट बिकम्स ए ह्यूज money for that. So SIM card. So that's the reason you have one name, because none of these SIM card or GPRS providers, they do not guarantee 99% uptime. So that is the issue. So सर हेलो, yes. सर हेलो, एक बात मैं please. बोलना चाहता हूँ सर। Okay. आपने एक बात बहुत ही अच्छा बोला, आईओटी जो डिवाइस है, ठीक है, हाँ। वो अभी मार्केट में वो लाइट में भी इनबिल्ड हो चुका है और फैन में भी। मैं एक दिन आईओटी पढ़ रहा था तो उसमें देख रहा था आईआईसी बेंगलोर का, तो वहां से वीडियो वगैरह देख रहा था। वहां पर आईआईसी में आईओटी के ऊपर जो लाइट वगैरह एलईडी वगैरह हो रहा है, फैन वगैरह हो रहा है, तो सब में मार्केट में आईओटी बहुत का जो नेटवर्क है बहुत ही फैल चुका है। तो इसीलिए क्या है, एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। तो उसके लिए क्या होगा, वो जो एनर्जी अकाउंटिंग का जो प्रॉब्लम है, वो उसका जो एनर्जी अकाउंटिंग के लिए जो टाइम लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा आईओटी की वजह से। क्योंकि बहुत सारा जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज है उसमें आईओटी इनबिल्ट करके चल रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सब जगह में तो इनबिल्ट करने में बहुत सारा टाइम लगेगा सर। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। क्योंकि सबको वो जो खरीदना पड़ेगा, जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा और सब कोई खरीद नहीं पाएगा। क्योंकि वो जो फैन होगा उसका जो चार्ज होगा, लाइट जो होगा उसका जो चार्ज होगा बहुत ही ज्यादा होगा। That is not for utility, na? That IoT is for individual customer. We are not getting into that. For utility, आपको मीटर है, मीटर is IoT device for you. So we are talking about अगर individual customer. हाँ सर, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट अगर दे एक कस्टमर को, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो मीटर में कर रहा है, गवर्नमेंट अगर कोई प्रोसीड्योर अगर करे तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा सब कस्टमर के लिए। नहीं ठीक है, we will noted your point, will submit it to the government. ओके सर, मैं अपना ओपिनियन बोला आपके जस्ट। Sure. ठीक है सर, थैंक यू। लेवल में फीडर को मीटर है सर, एंड डीटीआर पे भी मीटर है, डीटीआर मीटर है एंड कस्टमर्स को मीटर है, but we are not able to take the reading simultaneously. That is one of the major issue. And one more thing is, in DTI meter also available, sir. In meter is copper conductor. We are, and that meter is CT meter or CT meter operated. In that we have tapped voltage per meter. In that copper conductor and aluminum conductor both multiple alloys are there. Oh. From that it rusted, so it will voltage also dropping. Right. One more thing is, we have to map services to for such a particular distribution transformer, distribution feeder. That mapping also not done properly. Correct. That is without mapping the field. So these are the points which I wanted to talk about in energy audit methodology and those things. Then loss reduction का जो plan है, so this is the simple 6-step plan. What we always do that, like as you rightly said, the circle level पे आप जो कर रहे हो, feeder level पे करना चाहते हो, we have to set the target first there. आप पहले बोलो देखो मुझे कडप्पा सर्कल में this is the total loss, अभी loss 20% है, मुझे इसको 15% करना है. So you need to set that target first. नहीं तो फिर loss reduction करने से कुछ होगा नहीं. So that is one of the first thing. Then आप जैसे बोलो feeder level पे मीटर है, लेकिन ऑडिट जब तक नहीं परफेक्टली हो पाएगा जब तक आपका ये वाला नहीं होगा, एज यू राइटली सेड कंज्यूमर मैपिंग नहीं होगा तो फिर ऑडिट कैसे करेंगे आप. सो दीज आर द प्री रिक्विजिट, ये तो आपको पहले ही करना पड़ेगा. देन ये जो इंडिकेटर्स है तो आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे आप बोल रहे हो दैट ये जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वाला एक केस आपने दिया,
कहीं होगा अर्थिंग नहीं है, कहीं होगा कलेक्शन नहीं हो रहा है. सो देयर विल बी डिफरेंट. सो ऑल दिस बिजनेस प्रोसेसेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एज यू राइटली मेंशन दैट लॉस निकल रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग को पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू. Monthly we are doing it. Actually, loss means it should be a minute to minute. Yeah, but minute you cannot do that. So, but what is your objective? Objective is to यहाँ loss हो रहा है. I need to identify, उसको address करेंगे. Next महीने में loss नहीं होगा. You cannot address total जगह पे जो है ना, you cannot address the entire losses in even 1 year में खत्म नहीं कर पाओगे. It will take 18 months, 24 months, 3 years टाइम लगेगा, depending on, क्योंकि कहीं आपको लगेगा बहुत लंबा LT लाइन है, which we discussed about the technical loss. You cannot replace लंबा LT line with a ST line overnight. It's a lot of investment required. आपको अभी तो RDSS scheme जो आपने सुना है. So this scheme, government of India is giving 3 lakhs crore rupees just to upgrade your system. ये जो investment जो भी कर सकते हैं. So this kind of a thing. ऐसे scheme बहुत आए हैं. So if we can have a separate session on the total कितना scheme चालू हुआ है कब 2004-5 चालू हुआ है. If you heard the name APDP, उसके बाद APDRP हुआ, उसके बाद बोला RAPDRP, तो बीच में भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग FRP स्कीम आया, देन उदय, तो अभी जो आया इसका नाम बोल रहा है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, राइट. एस है, 2 एस, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन एस RDSS बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. So then this part is basically all the action points which you can take it to the field, which you wanted ना कैसे करेंगे. So data analytics का I will show you some of the screenshot maybe, but data analytics, मतलब if I start from data analytics today, you will not be able to relate. Data analytics क्या data है अपने पास, we need to try to understand those and based on that, and then ये जो issues जो मिला तो इसको implement करेंगे. And implementation, as I rightly said, कुछ आपको मानने लगा I have to replace 5 transformers. If I replace 5 transformer, तो ट्रांसफार्मर तो 5 इमीडिएटली 5 दिन में रिप्लेस नहीं हो जाएगा. I have to give indent, ट्रांसफार्मर अवेलेबल है क्या नहीं है, ये सब देख के it might take 1 month, 3 months. So we have, and then उसको कहीं एक रिकॉर्ड रखो. I have identified, मुझे 5 ट्रांसफार्मर चाहिए ये this particular गांव में. Once you recorded it, then someone is monitoring it. So this is monitoring and accounting activity. So this is how it covers this 6-step loss reduction. That is what I wanted to discuss today. And एक framework अगर करेंगे, because unless आपका question एकदम सही, this slide answers you that we need to have a robust system and process. आप बोल रहे हो ना. So this is the framework which आपको शायद theoretically पता है कि करना चाहिए. Theoretically okay है, but we have to implement it in the field. तो इसमें any of the things which is new to you, फिर तो आप दोनों तो continuously ही काम करते रहते हो. So I'll pause here for the online team also. Anything you see in the screen which you have not heard before? एनर्जी ऑडिट के बारे में थोड़ा बता दीजिए. वो तो एक सेपरेट सेक्शन ही है, एक एनर्जी ऑडिट. ऑनलाइन इंटरवेंशन फ्रेमवर्क. इंटरवेंशन मतलब व्हाट आर यू सपोज टू डू, हम क्या करेंगे. लॉस रिडक्शन के लिए हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, दैट व्हाट आर द थिंग्स वी विल बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड. सो दैट इज व्हाट द intervention framework, which we have a separate section today to cover. If it is okay, then any other question on this slide? Because what we are trying to say, देखो, overall circle level से मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि let's not go discom level या state level में जाके फायदा नहीं है. Circle is normally in India, circle is per district.
one district, every district headquarter is one circle. So whoever doesn't know, so that is always a profit center which has been, or a cost center, it has been given in Indian power sector. So that's the reason I have selected circle. Circle से आपको पता करना पड़ेगा that you have to go section wise. कौन सा section? As you rightly asked, how do we pinpoint? तो आपको pinpoint करना पड़ेगा. Okay, this total circle has 40% loss, but 5 of 6 section might be having 60% loss. So where are those? जहाँ आपका loss ज़्यादा है, वहाँ हम लोग को ज़्यादा focus करेंगे. So this is the methodology we are talking about. And feeder wise, feeder I am talking about 11 kV feeder. When you say feeder, feeder is 11 kV feeder. 11 kV feeder wise audit, because this is, I mean, government of India has done many such schemes. आपने देखा होगा REC का वेबसाइट में आप जाओगे तो देखोगे there is a 11 kV feeder metering scheme जो दिया हुआ था. So all, I mean, right now, Ministry of Power or Government of India claims that India we have 100% 11 kV feeders have meters. It's a claim, it's a claim, but आप लोग फील्ड से पता पाओगे एक्चुअल है कि नहीं. डॉक्यूमेंट में हम लोग को पढ़ते हैं तो हाँ सब जगह लिखा है 100%. इफ वी हैव 100% meters in 11 kV, at least we know how much energy is going to those feeders. Now then what we need to do, we need to map that with the 11 kV feeders जितना है उसमें से कितना बिलिंग हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है. We discussed this AT&C losses last time. So if we get into that every feeder में total energy इतना जा रहा है, हम 500 रुपीस का एनर्जी भेजा है इस फीडर में, कितना पैसा आया है. If we connect that, if we say get 300 rupees का आया है, then 200 rupees is the loss. So we know that this feeder में loss है. Then after that you go, क्योंकि feeder जब हो गया ना, इसको पिन पॉइंट हो गया, it's much easier for you. एक feeder में कितने कस्टमर होते हैं मैक्सिमम, अब बताओ आप लोग. एनी 2000. तो 2000 से आपको पता चलिए 2000 कस्टमर में ये अगर लॉस है, so you can easily address those losses rather than getting पूरा डिस्को में इतना लॉस हो रहा है, सर्कल में लॉस हो रहा है, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे हम. तो उसके बाद इसी हिसाब से हम एक जो स्टडी करके मास्टर प्लान बनाएंगे, उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. दैट इज व्हाट द, एंड सब कुछ में इन्वेस्टमेंट चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. तो नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो हैड गिवन ए इन्वेस्टमेंट स्कीम.